Dear students, and welcome to the new chapter, that is integral calculus. Okay, integral calculus. There are two types of integration. Number one is indefinite integration. Number two is definite integration. So this is integral calculus. There are two types of integral calculus. Number one, indefinite integration. Indefinite integration. Number two is definite integration. Number two is definite integration. First we'll discuss indefinite integration. After completion the indefinite integration, then we'll start definite integration. Okay, so indefinite integration will take some classes, and after completion we will start definite integration. This is application of the integration. Okay, we have to find here area of the plane curve, area under the plane curve. It is a solution of, in this indefinite integration we get solution of some differential equation. Okay, so its application we can find the area under plane curve. Okay, these are the applications of the integration. Now what is integration? We'll start indefinite integration. Okay, we'll start indefinite integration. Okay, now indefinite integration. Okay, what is indefinite integration? So definition of integration. So definition, the reverse process of derivative, or the opposite reverse process of derivative. This is definition. The reverse process of derivative is called antiderivative or integration or primitive. Same meaning, primitive. So what is integration? The reverse process of derivative is called integration. It is also called antiderivative or primitive. For example, d by dx of sin x is equal to what? Cos x. So integration of cos x with respect to x is sin x. Okay, so another x, so d by dx of sin x plus any constant, where c is any constant. This is also cos x. Its reverse process means integration of cos x. That implies integration of cos x with respect to
with respect to x is sin x plus c. एटी कौन आम ऑब्जर्व कले देख स्टूडेंट्स ना cos रो इंटीग्रेशन होची sin x आउ cos रो इंटीग्रेशन होची sin x plus c. This integration is called particular integration. Okay, sin x fix here, but it is sin x plus c. This is what? This is where c is constant of integration. So integration of any function, the integral part contains arbitrary integral part contains constant of integration. This type of integration is called indefinite integration. This is not finite. For c is equal to 1 2 3 4 any real number, the graph will be changed. So there is indefinite integration has not unique. Okay, so this is called indefinite integration, not definite. Okay, so from the definition we can say if d by dx of from definition if d by dx of f of x is equal to suppose gx, then also d by dx of f of x plus any constant is same g of x. So the integration of reverse process, the integration of g of x with respect to x is f of x plus c. In symbol we write as integration of g of x dx means with respect to x is equal to f of x plus c, where c is called the constant of integration. This symbol indicates integration symbol of sign of integration. This indicates sign of or symbol of integration, not sign here, symbol of integration. This is symbol of integration. This symbol is along dash. Along dash means sum, s for sum. So the first letter sum is s. So this is along dash integration. What is meaning of integration? Sum. Meaning means integration meaning means total sum. So and number 2 here dx, differential of x, So this can be written as third one, integration gx dx is read as integration of gx with respect to x. Okay, these are the symbols and fundamental and definition of the integration. Now what is integral and integrand? What is integrand and what is integral? Now discuss about what is integrand and what is integral. Before discussed about
integrand and integral. Let's do some according to definition. We will discuss some examples of the integration. Okay, so we know students d by ds of sin x is equal to what? Cos x. Also d by ds of sin x plus any constant, same cos x. So by definition of integration, integration of cos x and with respect to x means dx is equal to sin x plus c. This is where c is constant of integration. This type of integration is called, the integration contains arbitrary constant, then the integral contains arbitrary constant. This is integrand. The function which have to integrate is called integrand. The answer obtained is called integral. If the integral contains arbitrary constants, then this type of integration is called a definite integration. Okay students, now what do you mean by integral and what is mean by integrand? What is integrand and what is integral? Let's discuss about integrand and integral. What is integrand and integral? The function which have to integrate, the functions which have to integrate is called integrand. The function which have to integrate is called integrand, and the function this result obtained, after integration is called the integral. For example, we know d by ds of sin x plus arbitrary constant is equal to cos x. That implies integration of f of x dx. F of x means what? Cos x here. Cos x dx is equal to sin x plus c. Here cos x is called, here this is called integrand, and this is called इंटीग्राल. जो फंक्शन को आम इंटीग्रेशन करिबा ताकू कहिबा इंटीग्रांड. जो आंसर आसीबो ताकू कहिबा इंटीग्राल. ओके, these are the definition of integral and integrand. Now some notes. Note 1, every function cannot be integrable. Every function cannot be integrable. सब फंक्शन को इंटीग्रेशन बाहर कर परिबे. The function which is integrable if it is the function
is integrable if it is the derivative of another function जदि गोटे फंक्शन कहार डेरिवेटिव हो पारिथिबो ताकू इंटीग्रेशन करि परिबा ओके नोट टू फॉर एग्जांपल sin integration of sin x by x dx not exist ओके sin x by x इंटीग्रेशन किए बाहर कर परिबनी not exist so sin x by x रो इंटीग्रेशन बाहर होनी ओके then integration of same function is differ by only a constant. Note to if d by dx of f of x is equal to suppose hx or we can write here d by ds of g dash x and d by dx of this is f dash x and d by ds of g of x is equal to g dash x. Look carefully and if f dash x is equal to g dash x then integration of f dash x dx minus integration of g dash x dx is equal to c. गोटे एग्जांपल नबा सपोज d by dx of sin inverse x केते d by ds of sin inverse x केते 1 by root over 1 minus x square okay. Similarly d by ds of cos inverse x केते minus cos inverse x okay. Same thing 1 by root over this is minus cos inverse x derivative of minus cos inverse x root over 1 minus x square. Clear? So here this is what integration of this is equal to here integration of 1 by 1 minus x square dx is equal to sin inverse x and integration of root over 1 minus 1 x square is equal to minus cos inverse x. So integration of this minus this is equal to what? Pi by 2. So now integration of root over 1 minus x square minus integration of root over 1 minus x square is equal to what? Sin inverse x minus of minus cos inverse x. So this is equal to sin inverse x plus cos inverse x. So this is equal to pi by 2 which is a constant. So integration of two equal functions is differ by only c. That is integration of two equal functions are differ by a constant.
So integration of two equal function is differ by c. Okay, now note number 3, the derivative of d by ds of integration of f of x dx. Derivative of f of x dx is equal to what? Derivative of integration of f of x dx is equal to only f of x. But integration of d by ds of f of x is equal to here f of x plus c. For example, this is note number 3. For example, integration of cos x dx is equal to what? Integration cos x dx. Suppose f of x is equal to cos x. Suppose f of x is equal to cos x. So integration fx ds is equal to sin x plus c. Okay, sin x plus c1. Now derivative of d by ds of f of x dx, that is equal to d by ds of sin x plus c, which is equal to what? Which is equal to cos x. So this is equal to f of x, which is equal to what? Which is equal to cos x. Which is cos x means what? This is equal to f of x. Now come to this portion. Here f of x is equal to cos x. d by ds of f of x is equal to what? Minus sin x. And integration of d by ds of f of x dx, that is equal to integration of minus sin x. Integration of sin x is minus here. Integration of sin x is equal to minus cos x. So this is equal to cos x only. Okay, f of x and plus c. So this is equal to what? This is equal to f of x plus c. Okay, this is equal to f of x plus c. This is equal to what? Now f of x is equal to cos x. Derivative of cos x equal to minus sin x, and integration of d by ds of f of x means integration of d by df minus sin x, minus agogo sin x integration hochi minus cos x, that is cos x plus c. This is fx plus c. So this is the note. Derivative of integration means the function, and integration of the derivative of the function means function plus arbitrary constant. Okay, so these are the fundamentals. Now what is integration of 0? What is note 4? What is integration of 0? Notes: integration of 0 dx always constant, where c is a constant. So now we will discuss some standard formula of the integration. Standard formula, suppose derivative consider kariba. Number 1, d by ds of what? Derivative. This is d by ds of now d by ds of, suppose x to the power n plus 1 by
n plus 1. This is equal to what? N plus 1 whole to the power x to the n divided by n plus 1. So this cancel and this is equal to what? X to the n. That implies so this is integration, okay. So integration of this implies integration of x to the n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 आउ गोटे कांस्टेंट लिखा पड़ो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सी लिखा पड़ो हियर n नॉट इक्वल टू -1 ओके बिकॉज हियर n नॉट इक्वल टू -1 हियर n नॉट इक्वल टू -1 जब -1 है जो अनडिफाइंड है सिमिलरली कंडीशन इज प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू -1 ओके जब n बदल रे -1 है जीवो एटा रहबनी दैट इज नंबर 2 फार्मूला नंबर 2 d by dx of 1 by suppose d by ds of log x d by ds of log x that is 1 by x 1 by x greater than 0 this is condition. So this is formula number 1, this is formula number 2 implies formula number 2 1 by x dx is equal to log mod x plus c okay. Similarly formula number 3 what is derivative of d by ds of integration dx okay. So this is derivative of log x is equal to 1 by x and what is d by ds of a to the x d by ds a to the x means what? d by ds of a to the x by log a. So d by ds of a to the x by log a. So this is 1 by log a constant and the a to the x this is log a cancel. So a to the x here a to the x that implies d by ds of a to the x by log derivative होची a to the x by log derivative होची a to the x. So integration of a to the x dx is equal to what? Is equal to a to the x by log a plus c. What is the condition? That is a greater than 0 and a not equal to 1. The condition is here a greater than 0 a not equal to 1 okay. So formula number 4 what is d by ds of e to the x is equal to e to the x. So that implies 4 integration of e to the x dx is equal to integration ex dx is equal to what? E to the x plus c okay. Now formula number 5 d by ds of sin x is equal to cos x sin x रो डेरिवेटिव cos x तेणु cos x रो इंटीग्रेशन होची sin x cos x ds is equal to sin x रहिबा प्लस c रहथो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन पई. नंबर 6 d by ds of minus cos x रो डेरिवेटिव होची sin x तो that implies integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. This is formula up to formula number 6. Now formula number 7.
Then 7, d by dx of tan x is equal to sec square x. So formula number 7 is equal to integration of sec square x with respect to x, that is tan x plus c लिखियो बाध्य infinite integration by 8 d by ds of minus cot x. This is equal to what? Minus cot x derivative. Cot x होची minus cos square x, minus cot x derivative होची cosec square x. So integration of cosec square x dx is equal to what? Minus cot x plus c. Now derivative of d by ds of sec x, that is equal to sec x into tan x. So integration of sec x into tan x ds is equal to what? Sec x plus c. Okay, then d by ds of cosec x minus cosec x. अच्छा cosec x रो डेरिवेटिव होची माइनस cosec into cot, तो माइनस cosec रहबो प्लस है जो cosec x into cot x. That implies integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x. Okay, then d by dx of sin inverse x, d by ds of sin inverse x is equal to what? d by ds of sin inverse x is equal to 1 by root over 1 minus x square. Also d by ds of minus cosec inverse x, same thing, 1 by root over 1 minus x square. So 11 number, that is d by ds of root over 1 minus x square is equal to sin inverse x plus c or minus cos inverse x plus c, same thing, where x belongs to here x belongs to minus 1 to 1. Okay, this is formula number 11. Now formula number 12. Now 12, d by dx of tan inverse x or d by ds of minus cot inverse x. This is 1 by 1 plus x square and this is also 1 by 1 plus x square. So this is integration of 1 by 1 plus x square dx is equal to tan inverse x plus c or minus cot inverse x plus c. Okay, then 13 d by ds of sec inverse x. This is equal to what? 1 by mod x root over x square minus 1. Also d by ds of minus cosec inverse x. Minus cosec inverse x is equal to minus 1 by mod x into root over x square minus 1. Mod x greater than 1. Okay, here mod x greater than 1. So 13 is what? 13 is g. So integration of 1 by x into root over x square minus 1 dx is equal to what? This is equal to
and this is equal to here, this is the integration of 1 by x square is equal to tan inverse x plus c or minus cot inverse x. This is tan inverse x, correct? Tan inverse x plus c. It is not visible, so tan inverse x plus c. This is minus cot inverse x plus c. And now integration of 1 by x into square root of x square minus 1 into dx is equal to here sec inverse x plus c or minus cosec inverse x plus c. Okay, and these are the formulas and extra formula. So what is integration of dx x plus c, integration of k constant into dx, integration of some constant into dx, constant into x plus c. 16 integration of mod x dx, that is x into mod x by 2, x into mod x by 2 plus c. Okay, these are the standard formulae. This is the standard formula, and this is the formula of special type ds integration x plus c, k ds integration k x plus c, and integration mod x ds is equal to x mod x by 2. These are the standard formulae of the integration. Now theorems and rules of the integration. Theorems or algebra of integration or theorems of integration. Theorems of integration. Okay, number 1, integration of some k into f of x ds. So k ta को बाहर काढिबो, integration f of x dx. Number 2, integration of f1x plus or minus f2x plus or minus f3x, like this, plus or minus fnx dx. So this can be written as f1 integration of f1x plus or dx. आमे सेपरेट करिबा सब जगह. This is integration dx. Okay, so this can be written as what? This is equal to what? Integration f1x dx plus minus integration f2x dx plus dot up to integration plus minus integration fnx dx. Okay, so एटी u into v and u by v formula एटी नाई. u into v पढ़ा आम बाई पार्ट्स पढ़ा. ए दुईटा ही कनसेप्ट अच्छी फंडामेंटल रे. नाउ एटी जदि डिवाइड अच्छी कौन करवा से टाइप क्वेश्चन कनसेप्ट पढ़ा. जदि अच्छी इंटीग्रेशन देख टाइप देखी ए टाइप कह दौ टाइप इंटीग्रेशन सपोज एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स. एट तो यू बाई भी फॉर्मूला पड़ोनी डेरिवेटिव भाया. आप गोटे फॉर्मूला अच्छी कंडीशन कौन थी where the degree of f of x greater than or equal to the degree of g of x. जदि ये टाइप अच्छी आम कौन करवा डिवाइड करवा. वर्किंग रूल divide fx by gx, that is f of x divided by g of x is equal to what? Quotient is equal to quotient plus remainder by divisor. Okay, this is the type of the u by v not applied here. डिवाइड करिया पड़े हमको
एंड एटा अप्लाई करियो पड़ो गोटे एग्जांपल छोटे एग्जांपल दूची यार गोटे क्वेश्चन करवा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx मु कही ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं जदि न्यूमरेटर पावर ग्रेटर और इक्वल थिबो न्यूमरेटर पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू थिबो डिनोमिनेटर रो एटा एफएक्स एटा जीएक्स आर पावरटा जदि आठू बड़ कि इक्वल थिबो तबे आमे डिवीजन करियो पड़ो कोन करियो पड़ो डिवीजन सो आमे रफली साइड रे डिवाइड करबा 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कले दिस इज क्वेश्चन ए डिवाइड करबा सो सॉल्यूशन एम लिखिबा 3a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कले केते हो 3a स्क्वायर प्लस 3 सो इट माइनस हो इट माइनस हो रिमाइंडर केते रहउछ रिमाइंडर होउछ -3 सो आमे लिखि परिया कोसेंट दिस इज इक्वल टू व्हाट कोसेंट मींस 3 रिमाइंडर मींस -3 डिवाइड बाय जो 3 डिवाइड कोछ डिवाइजर तो कौन हो ना x स्क्वायर प्लस 1 यार इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन कौन आसोड़ी 3dx और 3 टा बाहर को नहीं परिबा कांस्टेंट को माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 3 अच्छी बाहर x स्क्वायर प्लस 1 dx सो एटा केते आसीबो इंटीग्रेशन 3ds रो इंटीग्रेशन x आसी मु कहिथि फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x एंड एबे फार्मूला को हला डेरिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय या फार्मूला कोन को है देखो इंटीग्रेशन एटा हमें फार्मूला कहि छी इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू x and x plus c and integration of x square plus 1 is equal to केते tan inverse x plus c तमे दी गोटे क्वेश्चन रे 10टा सी लिखिया दरकार नहीं केवल गोटे सी लिखियो 4टा 5टा के लिखे नहीं जेहेतु सब कांस्टेंट मिसले गोटे कांस्टेंट हेउथो तो आ पे c1 आ पे c2 लिखिया दरकार नहीं ओनली गोटे सी लिखिबो सो आर फार्मूला जानछि tan inverse x सो 3 tan inverse x प्लस गोटे इंटीग्रेशन गोटे ही सी लिखियो सी दिस इज फर्स्ट मेथड देन अनदर मेथड दिस इज सेकंड मेथड कौन करे ना टिके एडजस्ट करियो पड़ो ये 3a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 अछि ना नहीं एडजस्ट करियो पड़ो केमदी ना 3 टा बाहर को नै जिबा कौन कले ए डिनोमिनेटर कैंसल हम माने x स्क्वायर प्लस 1 करी आउ कौन करी -1 करी ये गोटे पार्ट ये गोटे तापर सेपरेट कर दियो x स्क्वायर प्लस 1 एबे अलगा अलगा कर दियो केता आसीबो अलगा अलगा कले केता आस देख लो 3 into you have x स्क्वायर प्लस 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 dx -3 बाय इंटीग्रेशन 3 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx सो एटा कैंसिल हैला नहीं सो आसला 3 इंटू केता आसला सो देखिलो एटी फार्मूला होची ds रो x प्लस c होची एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 tan inverse x सो एटी इंटीग्रेशन 3 रहला ds रहला -3 टा बाहर को 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 रहला dx ओके सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ds इंटीग्रेशन x हम -3 ये जो आर फार्मूला मु लिखी छी देखो या फार्मूला होची केते tan इनवर्स x इंटीग्रेशन सरला पर गोटे सी लिखियो ओके ए टाइप रा गोटे क्वेश्चन देखो जी ए टाइप रा गोटे क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन इंटीग्रेशन x टू द 6 बाय s स्क्वायर प्लस 1 dx यार पावर ग्रेटर अच्छी तेणु डिवीजन हम सो सॉल्यूशन इज x टू 6 बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx ओके ये डिवाइड करवा पड़ो रफली आमको कौन ना x टू 6 को डिवाइड करवा x स्क्वायर प्लस 1 रे तो केते आसो कहले मते x टू 4 लिखले x टू 6 हम एंड ये आसो
प्लस एक्स फोर्थ सो ये माइनस हो ये माइनस हो ना नहीं ये तो कैंसल है माइनस एक्स टू पावर 4 रहा सो ये माइनस एक्स स्क्वायर देखा पड़ो माने माइनस एक्स फोर्थ है माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस हो प्लस हो ये कैंसल है रहा के एक्स स्क्वायर रहा ओके रहा एक्स स्क्वायर एवं एक्स स्क्वायर अच्छी प्लस 1 करियो पड़ो तो रहा के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस हो ये माइनस हो ये कैंसल है ये माइनस 1 रहा आउ डिवाइड हो पार कि नहीं आउ डिवाइड हो पारे तो चेक कर दियो आउ थे एक्स स्क्वायर अच्छी फोर्थ एक्स एक्स प्लस एक्स फोर्थ है ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस एक्स फोर्थ रहा तेणु माइनस एक्स स्क्वायर नेले माइनस एक्स फोर्थ ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये माइनस है माइनसटा प्लस है माइनसटा प्लस है रहा एक्स स्क्वायर तो 1 नेले एक्स स्क्वायर है ये माइनस प्लस 1 है माइनस ये माइनस कैंसल माइनस 1 है एप्लाई करो कोसेंट कोसेंट माने कौन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करियो कोटा कोसेंट प्लस रिमाइंडर कोसेंट होची एक्स फोर्थ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमाइंडर होची माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एतिकीर इंटीग्रेशन सो आम लिखिपर इंटीग्रेशन एक्स फोर्थ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आउ गोटे पार्ट होची 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx सो एक्स फोर्थ रो इंटीग्रेशन कौन हम 5 प्लस एक्स टू द 5 बाई 5 को फॉर्मूला पड़ला यही फॉर्मूला पड़ी कौन फॉर्मूला ना एक्स टू द पावर n इंटीग्रेशन एक्स टू n ds इज इक्वल टू एक्स टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 यही फॉर्मूला पड़ुछि सो ये हम के माइ एक्स 2 अच्छी 3 बाई एस क्यू बाई 3 हम 1 dx ds इंटीग्रेशन है x यार फॉर्मूला लिखी आ प्रीवियस क्वेश्चन रे केते tan इनवर्स x प्लस c एतिक है आंसर ओके अनदर मेथड होची सेकंड मेथड आपको सेटिंग करियो पड़ो सेकंड मेथड सेटिंग करियो पड़ो कौन अच्छी एक्स टू पावर 6 बाई दिस इज सेकंड मेथड आपको सेट करियो पड़ो dx एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन कले एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल हम तो मुझे करी एक्स क्यू स्क्वायर होल क्यू ये प्लस 1 करी माइनस 1 करी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखली dx अच्छा ए क्यू माइन फार्मूला कौन अच्छी कहले मते ए क्यू फार्मूला कौन अच्छी ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला तो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला कौन अच्छी कहले मते ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही फार्मूलाटी यूज करो ओके को फार्मूला जो साइड लिखली ए फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही फार्मूला अप्लाई करियो फास्ट एटा सेपरेट कर दियो एक्स स्क्वायर क्यू प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx सेपरेट कली एटा को फार्मूला अप्लाई करो कौन फार्मूला अप्लाई करी ना फार्मूला होची ए क्यू प्लस 1 रो क्यू लिखि पारि तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माने ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर रो स्क्वायर एक्स फोर्थ माइनस ए इंटू बी ए मीन्स एक्स स्क्वायर बी माने 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ओके सो एटा कैंसल है तो एक्स फोर्थ इंटीग्रेशन एक्स यही फॉर्मूला पड़ो एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 1 इंटीग्रेशन एक्स माइनस tan इनवर्स x प्लस c दिस इज सेम आंसर देख सेम आंसर गोटे सेटिंग करियो पड़ो आ गोटे डिवीजन कले हो ओके ना अनदर क्वेश्चन धन्य क्वेश्चन नंबर में देछि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 dx तो इंटू रो फॉर्मूला किसी नहीं आम मल्टीप्लाई करियो पड़ो ये
तो solution is integration x square plus 1 into 2x plus 5 dx। तो मल्टीप्लाई कले केते होची 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x, ओके 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। एबे कौन करिबा ना 2 टा कांस्टेंट x क्यूब रो इंटीग्रेशन माने x4 by 4 को फार्मूला पड़ला ना यही फार्मूला इंटीग्रेशन x to n dx is equal to x to n plus 1 by n plus 1 plus 6, ओके। सो 5 टा कांस्टेंट x स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब by 3, 2 टा कांस्टेंट x रो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x to 2 by 2 and 5 ds, 5 टा कांस्टेंट ds रो इंटीग्रेशन x plus c। This is your answer. Now another question, suppose you are given integration of x cube minus 1 into x square plus 2 divide by suppose x to the power 6 dx। एटा केम करिवा फास्ट मल्टीप्लाई कर दियो केता बडी तो इंटीग्रेशन हबो एटी x to the power 5 plus 2x cube हला माइनस x square माइनस 2 होल डिवाइड बाय x6 जो अच्छी x6 से डिवाइड कर दियो सब जाको x to 6 by x to 6 by x to 6 into dx। clear? So this is equal to what? Integration of 1 by x plus 2 into integration of what? X to the power minus 3 and this is minus x to the power minus 4 and this is 2 x to the power minus 6 into dx। मन रख ए गोटे केस में 1 by x पई केवल गोटे फार्मूला अछि log x, आउ सबु जा पई x to n फार्मूला पड़ियो। मन रख अरे भाई x to the power minus 1 dx होची log x plus c, आउ सबु जा पई x to n पई other than 1 x to n plus 1 by n plus 1 plus c, n not equal to minus 1। n जदि माइनस 1 होची तो एटा लिखि परिबा हमें x 1 by x लिखिबा जा x to r minus 1 लिखिबा ताहा। सो x to r minus 1 हेले log x फार्मूला पड़िबो आ बाकी जा पई ए फार्मूला। सो कोन हबडी log x टू कांस्टेंट x to the power minus 3 plus 1 minus x to the power minus 4 plus 1, this is by minus 3 plus 1, this is by minus 4 plus 1, 2 into x to the power minus 6 plus 1 by minus 6 plus 1 plus c। So this is equal to what? Log x plus 2 into x to the power minus 2 by minus 2 and minus x to the power minus 3 by minus 3 and minus 2 x to the power minus 5 by minus 5 plus c, or this can be the answer is what? Log x and minus minus plus minus 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 1 by what? 2 to cancel minus 1 by x square, this minus minus plus 1 by what? 3x cube, 1 by 3x cube and minus minus plus this is 2 by 5 x to the power 5 plus c, this is answer। okay, now another question, this is a to the x plus 3। so एटा को कौन लिखि परिया में ना a to the x into a to the 3 लिखि परिबा dx। so a to the 3 टा कांस्टेंट आगु मानली a to the x ds। so this is equal to a cube and its formula, this formula what? This formula is a to the x by log a plus c। so this is equal to what? a to the power x plus 3 by log a plus c, this is answer formula। this is formula, we have a to the x log a, this formula। so another question, this is a to the power
2x into b to the power 3x dx. What is this integration? So you can write here a square bq whole to the power x, okay, dx. What is this? We know integration of a to the power x ds is equal to a to the power x into log a plus c. This is formula, okay, this is formula. So consider this is a. So this will be what? A means a square b to the power x, a to the power x by log a. Log a means what? A square bq plus c, or this is equal to what? A to the power 2x b to the power 3x divided by 2 log a plus 3 log b plus c. This is your answer. These are the some problems of integration. Now in next class we will do some more problems. Thank you. Have a nice day.